Assalamu alaikum and welcome to the second session of today. So our today topic was the different assessment methods in the undergraduate medical education. In the previous session, we discussed about the Miller pyramid, and then we discussed about the various assessment methods to assess the knowledge of undergraduate students of health sciences, and which we discussed the multiple choice question A type, then the multiple choice question R type, also known as the EMI or EMQ. Then we discuss the key feature question and then the short answer question. So in this session, we will talk about again to the essay question, and we will have some recap of the short answer question. Then we will talk about the modified essay question, and then the last, the script concordance test. As we discussed previously, the multiple choice question and A type and R type, both they are objective type, as well as the key feature question as well. While these three questions, the modified essay question, short answer question, they are subjective assessment. Subjective assessment means subjective questions. They as compared to these three type of assessment methods, we required a proper subject specialist, or we can say that expert for its marking. That's why it is very costly, and not only costly, it is time consuming as well, because the marking of such question, either they are short answer question, they are the essay question or the modified essay question, they require time in the consuming. Script concordance test that will be discussed in this session. There is a new method introduced in the examination, which is specifically used during the when there is uncertain situation or there is atypical, unexpected situation. So let's go towards the short essay question. So a short answer question, a short essay question. These and the long essay question as well as the modified essay question, they all are open-ended question. And all these questions, they require time when the students are going to answer it, and that's why they have very less reliability per our test. One of the requirement for these questions is that and that will it's increase its reliability, that as a teacher we should structure a very unambiguous, clearly stated, well-defined answer key for all these questions. This question, during the construction of the answer for this question, we sometimes may have two pathologies. This is the overstructure and understructuring of the key or the answer. So it should be avoided. The answer shouldn't be too much in detail for the short answer question, and neither it should be too short that even इसमें जो जरूरी बातें होती है वो जो कंटेंट होती है वो भी इसमें शामिल ना हो. इसके अलावा जो है हर एक मार्कर्स जो है, हर एक एग्जामिनर जो है वो सेम क्वेश्चन उसको चेक करना चाहिए. इसकी रेलेबिलिटी, थोड़ी सी स्कोर की रेलेबिलिटी बढ़ेगी अगर एक एग्जामिनर जो है एक क्वेश्चन, पूरी ग्रुप की एक क्वेश्चन चेक करे और दूसरे एग्जामिनर दूसरे क्वेश्चन चेक करे, रेदर देन कि कुछ स्टूडेंट्स की पूरी पेपर एक एग्जामिनर चेक करे, कुछ स्टूडेंट की पूरी पेपर जो है दूसरी एग्जामिनर चेक करे, तो इससे जो रिलायबल स्कोर जो है ये नहीं आएंगे. Essay question, they are required when the candidates, they are required to process, summarize, evaluate, supply or apply information to the new situation. Essay question, ये short answer question से भी ज़्यादा time लेते हैं during the answer, and that's one of the reason nowadays why the long essay question, they are not in practice. Modified essay question, they are the modified form of the essay question, और इसमें एक केस होता है और इस केस के नीचे कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं और इन क्वेश्चन की एक सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस में पूछा जाता है. और इसमें इसमें सीक्वेंस इस तरह होती है कि देयर इज इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द क्वेश्चन, देयर इज लिंक ऑफ वन क्वेश्चन विद अनदर. और अगर उसमें एक स्टूडेंट जो है एक क्वेश्चन को गलत आंसर दे देता है तो
सब्सिक्वेंटली जो नीचे आंसर्स होंगे वो फिर जो है इवेंचुअली वो भी गलत होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट जो है ये और डेटा है जो हम एज अ टीचर देंगे, इसलिए हमने जब क्वेश्चन देते हैं या उसके लिए जो डेटा पेशेंट डेटा देते हैं, सो इट शुड बी वेरी क्लियर कि जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं उसकी आंसर इतना डेटा इनफ होनी चाहिए कि होनी चाहिए वहाँ पे। इट शुड बी डेटा शुड बी अवेलेबल इनफ कि जो क्वेश्चन हमने पूछे गए हैं और पेपर में उनसे पूछे हमने, तो उसके लिए आंसर वहाँ पे मौजूद हो, समझ में आ सके कि ये है क्या चीज। तो अगर वहां पे पहला क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं तो फिर आगे जो है उसके सारे क्वेश्चन जो है ये गलत होंगे। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे, जो ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन अभी हमने बात की कि देयर आर सीरीज ऑफ क्वेश्चन आफ्टर दैट केस, सो दे मे रिलेटेड टू द हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन, फाइंडिंग, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट एंड सो ऑन। मिसाल के तौर पर वी हैव अ क्वेश्चन, Mr. A is a patient and that tells you that she has had keta uh, for years and that in the last 2 months she has headache she has had a headache made worse by blowing her nose. तो पहले से जो keta था उसको, and nowadays when there is excessive accumulation of that mucus in the nose and when she is going to blow her nose तो उससे उसको हेडेक होता है। अब इस ये जो न्यू पूरा इंफॉर्मेशन है इसमें व्हाट आर द टू कॉमन डायग्नोसिस, और यहाँ पे अगर स्टूडेंट इस आंसर क्वेश्चन का आंसर गलत लिख देते हैं यानी गलत डायग्नोसिस लिख देते हैं, so is next question that is being associated with the first question, that is linked with the first question. So the next question is give 3 symptoms or signs associated with each diagnosis. अब यहाँ पे अगर वो गलत डायग्नोसिस लिख देता है तो ऑब्वियसली उसकी सिम्टम्स जो वो लिखेगा वो भी अपनी ही लिखेगा, डायग्नोसिस की ही लिखेगा तो वो भी गलत होंगी। सिमिलरली अगर हम इसी तरह इसमें मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन ऐड करें तो वो उसी डायग्नोसिस का मैनेजमेंट लिखेगा जो स्टूडेंट लिख देते हैं। सो इफ द स्टूडेंट्स write the answer to the first question wrong, so for all the upcoming question he or she will be in the wrong direction. But if you write the answer to the first question as right answer, right diagnosis, suppose, so obviously eventually he or she will write the correct answers for the second and third as well if he is known to those knowledge, और इसी तरह जो है उनकी he or she will be in the right direction. Script concordance test, इसको it's a new noise methods which is still not in practice, but it is very important और इस स्पेसिफिकली इसकी जो फेस वैलिडिटी है ये बहुत ज़्यादा है, कंटेंट वैलिडिटी उसकी हाई है। इसकी वजह ये होती है, दो वजह होती हैं। एक तो इसमें जो कंटेंट या जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रूटीन की जो एक्टिविटीज होते हैं जो व्हाट एवरी डे द डॉक्टर्स डू इन द क्लिनिक इन द वार्ड्स इन इन देयर क्लिनिकल सेटअप, तो उसी से रिलेटेड होता है, उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। एंड सेकेंडली ऑल द क्वेश्चंस they are very clear and they are related to that problem solving ability, so that's why they are they have good psychometric properties. These these are designed to test the clinical reasoning in uncertain situation, in the unexpected situation. And the principle of such question is that multiple judgment they are made in the clinical reasoning, and then there is concordance of these judgment with the panel of reference expert. Concording से मुराद एग्रीमेंट है कि यहाँ पे इस तरह होता है कि पेशेंट्स स्टूडेंट से पूछा जाता है एंड वो अकॉर्डिंग टू दैट लाइक स्केल वो अपना आंसर दे देता है, वो अपना स्टेटमेंट दे देता है और फिर उसी स्टेटमेंट को डॉक्टर्स की जो डॉक्टर्स भी स्टेटमेंट उसका दे रहे थे, एक्सपर्ट जो है उस स्टेटमेंट दे रहे थे, फिर उसके साथ उसके एग्रीमेंट देखा जाता है। सो वहां पर इफ देयर इज हायर एग्रीमेंट with the statement of both the examinees and the examiner,
तो उसको करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाता है। और अगर एग्रीमेंट कंकॉर्डेंस नहीं आती हार्मोनी, तो फिर वो ऑब्वियसली वहां पे उसकी कंसिडर गलत होगी। सो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है, ऐसा हमने कहा कि ये इन सब उस रिलेटेड से होता है जो दैट इज क्लिनिशियन डू एवरी डे। और उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में ये होता है कि ऊपर तो एक सिनेरियो होती है, उस सिनेरियो के बाद एक स्टेटमेंट होती है, और उस स्टेटमेंट शुरू होती है इससे कि इफ यू आर थिंकिंग ऑफ, और उसके बाद एक स्टेटमेंट होती है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जो है इसमें स्टार्ट होता है, एंड देन यू आर टू फाइंड। उसके बाद वो एक जहन में, अगर स्टूडेंट से पूछे तो कि आपके जहन में ये ख्याल आ जाता है, और लेकिन साथ आपको एक न्यू इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो पहले नहीं थी। तो उस न्यू इंफॉर्मेशन के बाद क्या स्टिल जो है आप अपनी प्रीवियस थिंकिंग पर कायम रहेंगे? स्टिल यू आर एडिंग दैट यस, आफ्टर द न्यू इंफॉर्मेशन द इनिशियल डिसीजन दैट इज इंडिकेटेड सुपरली हाईली इंडिकेटेड या कांट इंडिकेटेड या स्ट्रांगली कांट इंडिकेटेड, या आई एम अनश्योर अननोन टू दिस पॉइंट, या आई एम अनक्लियर। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, a 72-year-old woman is referred from the nursing home to the emergency room for an acute shortness of breath। और उसकी मेडिकल हिस्ट्री में टाइप 2 डायबिटीज है, हार्ट डिजीज भी है, और ही इज चेन स्मोकर एज वेल। उसकी मेडिकेशन की हिस्ट्री में रिकॉर्ड बताती है कि शी वाज रिसेंटली गिवन मॉर्फिन सल्फेट फॉर दैट intractable back pain, and you are discussing the possibility of the pulmonary embolism। अब इसी एम्बोलिज्म को डायग्नोस करने के लिए इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ऑर्डरिंग ए कंप्यूटर टोमोग्राफी, but after your thinking you just came to know that the results they have been reached to the ward, and it is 110, उसका लेवल जो है 110 था। अब 110 क्रिएटिनिन लेवल के बाद क्या अब पहले जो आप सोच रहे थे कंप्यूटर टोमोग्राफी का, still you are thinking that computer tomography is indicated when the serum creatinine level is 110 micromole per liter? If you are sure yes, that is highly indicated to +2, it is indicated though that will be +1, and neither more or less indicated, yeah, there is no matlab important if yeah, if even you are unsure, you are unclear to either about indicated or unindicated, so then 0. And if you are thinking that it is contraindicated, so -1, and if you are thinking strongly contraindicated, तो -2। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे इस लाइकेट स्केल पे अपना स्टेटमेंट दे देगा, एंड देन इट विल बी चेक्ड विद द एक्सपर्ट पैनल, जो वहाँ पे जो उन्होंने पेन स्टेटमेंट दिया होता है उनके साथ इनके कंकॉर्डेंस फिर चेक की जाती है। सिमिलरली देयर वाज अनदर क्वेश्चन कि इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ऑर्डरिंग एन VAQ lung scan, but you came to know that the patient has also have the COPD. So what do you think after the COPD, VQ lung scan, it is contraindicated or contraindicated? Similarly, you were thinking for an ordering and dimer test, but you came to know, and you found that in the medical records that she has also ovarian cancer. So after came to this point, क्या ये डिडाइमर्टिस ये कैन इंडिकेटेड है या नहीं है? तो इस तरह की क्वेश्चन को जो है स्क्रिप्ट कंकॉर्डेंस टेस्ट कहा जाता है, या ACT शॉर्टली कहा जाता है। इसमें एक केस डिस्क्रिप्शन होती है, और फिर इस तरह की इफ यू आर थिंकिंग ऑफ एंड देन यू हैव टू फाइंड दिस हाइपोथेसिस वुड बिकम, तो आपका ये जो हाइपोथेसिस है ये अब क्या होगा आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन। सो ये न्यू इंफॉर्मेशन है, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन एक्शन है, एंड दिस इज योर लाइकेट स्केल जहां पे आपने इसको एक आंसर देना है। This is another example of the script concordance test. A 25-year-old male patient is admitted to the emergency room after a fall from a motorcycle with a direct impact on the pelvis. Vital signs are normal. The X-ray reveals a fracture of the pelvis with a disjunction of the pubic symphysis. If you are thinking of the urethral rupture and then you find the urethral bleeding,
So now after this, जो आपका hypothesis था, this is become -2, -1, 0, +1, +2. So what you are thinking, still you are thinking that there will be urethral rupture after you find the urethral bleeding, or you are thinking that there may be no such situation. तो ये सीटी था, या इसको स्क्रिप्ट कंकॉर्डेंस टेस्ट कहा जाता है। ये जो है बहुत जरूरी होता है व्हेन द सिचुएशन इज like you are thinking for an unexpected or uncertain situation, then these questions are the best question for such situation. So this is the second objective, the assessment of performance, or the उनकी जो practical skills है वो हम किस तरह चेक करते हैं। तो यूजुअली जब हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशन करते हैं या उनकी हम असेसमेंट करते हैं, so as they are not fully trained, they are not graduated, they are not still able to, and allowed to practice, so we are mostly check them, we are mostly assess them in a standardized condition where there is control environment, there is not real life environment. Even the models and the patient, they are the dummy patient, or they are simulators, and such assessment is known as the assessment of performance in vitro. And on the other hand, suppose in the post-graduation assessment, practical skills, if we are going as a teacher, as an examiner, we are going to assess them, assess the postgraduate students. So obviously, they will be assessed in the real life environment, in the hospital, in the wards, with the real patient. So that assessment is known as the performance in vivo. As we are discussing the assessment of performance of the undergraduate student, so we will mostly be related to the simulated and the standardized condition. Both these assessment and the vitro and vivo that involve the demonstration of a skill or behavior, और इसकी जो बिहेवियर है या स्किल है, इसके एज एग्जामिनर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, और फिर जो है उस डेमोस्ट्रेशन की एज एग्जामिनर पर हम मार्किंग करते हैं। इसी मार्किंग के लिए मुख्तलिफ चेकलिस्ट यूज होती हैं, रेटिंग स्केल यूज होती हैं, ग्लोबल रेटिंग स्केल यूज होती है, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर रिपोर्ट है, बट मोस्ट स्ट्रक्चर रिपोर्ट्स दे आर यूज्ड। और इसमें अपकमिंग स्लाइड में हम दोनों के डिस्कस करेंगे कि ये जो रेटिंग स्केल है या चेकलिस्ट है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। और ये चेकलिस्ट जो है मोस्टली मुख्तलिफ असेसमेंट मेथड्स के साथ यूज होती हैं, इधर इफ वी आर going to assess the students through the ASCII or through the OSPI, या if we are higher level students है, या पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स है, या लास्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है मेडिकल की, या वहाँ पे इफ दे आर द डीपीटी स्टूडेंट्स है, नर्सिंग स्टूडेंट्स है, और उनकी क्लिनिकल स्किल्स जो है ये असेस की जाते हैं। सो डॉप्स कैन बी मेथड फॉर इट, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, पेशेंट सर्वे, इन तमाम में जो है ये रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट जो है यूज होते हैं। अब चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल में डिफरेंस क्या है? चेकलिस्ट जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ जो स्टेप रिक्वायर्ड स्टेप होते हैं, उन स्टेप की सिर्फ यस और नो जो है एग्जामिनर देखते हैं, यानी उनके पास एक सीक्वेंस से एक लिस्ट या एक समटाइम्स सीक्वेंस जरूरी नहीं होता, उस एक लिस्ट होती है स्टेप्स की, और स्टूडेंट जब वो प्रैक्टिकल स्किल सिमुलेटर पर ऑब्जर्व वो कर रहा है, तो एग्जामिनर उसको ऑब्जर्व करेगा और चेकलिस्ट में वो लिखेगा यस और नो, यानी उसने वो स्टेप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया या नहीं किया। सो दैट वुड बी अ चेकलिस्ट। रेटिंग स्केल उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। रेटिंग स्केल जो है ये न सिर्फ वहां पे यस नो यानी उसने वो स्टेप किया या नहीं किया, न सिर्फ ये करेगा बल्कि उस परफॉर्मेंस की और रेटिंग भी करेगा कि ये जो परफॉर्मेंस थी, ये जो स्टेप उसने किया, ये इसकी इस पे कॉम्पिटेंसी इसकी थी, पुअर कॉम्पिटेंसी थी, एवरेज था, एक्सेलेंट था, सुपर एक्सेलेंट था। मतलब ये हर एक स्टेप की रेटिंग यहाँ पे एक लैगर्ड स्केल में करेगा, या जो है उसकी इस तरह 3 ग्रेड यूज कर सकता है कि दैट वाज पुअर, दैट वाज एवरेज, एंड दैट वाज एक्सेलेंट।
तो न सिर्फ वहां पे उस स्टेप की चेकिंग करेगा कि यस द एग्जीक्यूशन आप उस स्टेप जो है हो गई है या नहीं हो गई है, बल्कि इफ हो गई है तो फिर उसकी रेटिंग भी करेगा। और न सिर्फ उस इंडिविजुअल स्टेप की रेटिंग होगी, बल्कि ग्लोबल रेटिंग जो है, या इस रेटिंग स्केल में ओवरऑल परफॉर्मेंस की रेटिंग भी होती है कि उसने कुछ स्टेप स्किप की, उसने कुछ स्टेप मिस की, या उसने कुछ स्टेप की है, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल उसकी जो एग्जीक्यूशन थी, तो ये एग्जीक्यूशन जो है, दैट वाज अ पुअर क्वालिटी, दैट वाज अ गुड क्वालिटी, दैट वाज अ एवरेज क्वालिटी, दैट वाज एक्सीलेंट। तो ये रेटिंग भी जो है दे देता है। तो इसी वजह से मोस्टली जो है द रेटिंग स्केल और द ग्लोबल रेटिंग स्केल उसको कहा जाता है, दे आर मच गुड एंड बेटर देन द simple checklist. But if we don't have the rating scale, that global rating scale, so then the checklist they can be used. जितनी भी हमारी ये क्रिटिकल असेसमेंट्स होती हैं, उन तमाम परफॉर्मेंस, उन तमाम असेसमेंट में एक नहीं बल्कि तीन बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। दो, वहाँ का जो फेस वैलिडिटी है बहुत हाई होता है, बिकॉज फेस वैलिडिटी का मतलब ये है कि ये वही चेक करते हैं जो पेशेंट के साथ रियल लाइफ इन्वायरमेंट में वहाँ पे क्लिनिकली होता है। सो वहाँ पे वो कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी की काफी हाई होती है वैलिडिटी। लेकिन जो तीन प्रॉब्लम्स आते हैं विद प्रैक्टिकल असेसमेंट एज एग्जामिनर, तो एक तो ये है कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। वहां पे चूंकि हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को असेस करते हैं, रियल लाइफ एनवायरनमेंट नहीं होता, दे आर सम, सपोज यूनिवर्सिटी की लैब्स होते हैं, दे मे बी दे नॉट मी लैब, दे मे बी द अदर क्लिनिकल लैब्स। तो वहां पे एज अ सिमुलेशन पे हम असेसमेंट करते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो नहीं होती। सेकंड जो इसकी हो सकती है, दैट इज द लिमिटेड ऑब्जर्वेशन। समटाइम एज एग्जामिनर हम उसको ऑब्जर्वेशन तो करते हैं, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन लिमिटेड होती है, और हम ईच एंड एवरी स्टेप जो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जो उनकी असेसमेंट है थ्रू द चेक लिस्ट, थ्रू द ग्लोबल रेटिंग स्केल, वो जो है वो सही नहीं होती। इसी तरह जो है चूंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन हम असेस कर सकते हैं, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जब हम उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। तो इसमें हम जो सैंपल वहां पे उसमें जो हम क्वेश्चन करते हैं, वो बहुत कम सैंपल है, तो बहुत कम कंटेंट हम असेस कर सकते हैं। तो ये जो थ्री प्रॉब्लम्स है कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, लिमिटेड ऑब्जर्वेशन है, एंड द लिमिटेड सैंपल स्किल्स, उसकी वजह से उसकी थोड़ी सी जो है वो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो है उस तरह के से हाई नहीं है। दो, उसकी वैलिडिटी जो है वो हाई है, लेकिन इनकी वजह से उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें। ये हम जो है हल कर सकते हैं if we can use the ASP and OSP, which is just which look like the real condition, और इसमें चेक लिस्ट भी होती है या रेटिंग स्केल भी होती है। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम है, उसमें थोड़े हद तक जो है हम डिफरेंट स्टेशन बनाते हैं, और स्टेशन में हम फिर क्वेश्चन डालते हैं, तो हम वहाँ पे मुख्तलिफ जो कंटेंट जो पूछ पूछ सकते हैं। तो थोड़ी हद तक जो है हम इन तीनों में जो मसले हैं, ये हम ऑस्पी और ऑस्की में ये हल कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि चेक लिस्ट बहुत जरूरी है। चेक लिस्ट जो है ये दे आर नेसेसरी, दे शुड बी देयर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेकिन समटाइम्स हम ऐसे चेक लिस्ट हम होते हैं जो या तो ओवर डिटेल होते हैं, या दे आर नॉट द स्टैंडर्ड चेक लिस्ट। तो दोनों चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि द एक्सपर्ट शुड वेरीफाई that this checklist should be used for the assessment of this execution, and it should be the over detailed checklist should be avoided, because उसमें से बहुत सारी लेस इम्पोर्टेंट वो चीजें आ जाती हैं, और उससे टाइम जो है सिर्फ वेस्ट होगा, और इसकी वजह से उसकी जो कंटेंट वैलिडिटी है या फेस वैलिडिटी है, ये मुतासिर हो सकती है। तो इसी वजह से ये ओवर डिटेल चेकलिस्ट के बजाय अगर ग्लोबल रेटिंग जो है ये फिर यूज किया जाए, तो दैट इज अ बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सपर्टाइज देन द डिटेल चेकलिस्ट। This is an example of the checklist which is used for that epidural anesthesia, and there are 26 steps. और स्टूडेंट जो है epidural, during the epidural anesthesia, the examiner will observe that
यहाँ पे कौन कौन सी स्टेप जो है वो उसने की है और कौन सी उसने नहीं की है, तो जस्ट वो जो है यहाँ पे यस नो की देखेगा। So this is the checklist for the categorization skills using the simulation. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिमुलेशन में उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, so that's why they should be skipped and they are not, इसके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे not applicable हम लिख सकते हैं। तो ये चेकलिस्ट जो है ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इफ द चेकलिस्ट इज मेड फॉर द रियल लाइफ पेशेंट, तो नाउ वी आर यूजिंग द सिमुलेशन पे हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो कौन कौन सी क्वेश्चन जो है उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं बनती, तो ये भी जो है एक्सपर्ट उसकी राय उस पर जरूरी है। दिस इज द रेटिंग जो अब डिस्कस कर रहे थे कि सपोज दिस इज ग्लोबल रेटिंग स्केल। इसमें एक प्रोसीजर, सपोज प्रिपरेशन फॉर द प्रोसीजर, रिस्पेक्ट फॉर टिश्यू, टाइम एंड मोशन, और ये मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप की फिर यहाँ पे वो ग्रेडिंग करेगा कि किस तरह की एग्जीक्यूशन थी, और एंड में ओवरऑल परफॉर्मेंस की भी ये ग्रेडिंग करेगा कि ये वेरी पुअर थी, ये ही वाज कॉम्पिटेंट या ही वाज वेरी कॉम्पिटेंट। तो इस तरह की जो है ये हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है इफ द ग्लोबल रेटिंग स्केल that is available, so then it is better to use in the ASCII rather than instead of the checklist. This is um, the global rating scale for the advanced categorization scale using simulation. तो ये if we look at this, this is the that categorization की लिए global rating है, और ये जो है this is the checklist। तो यहाँ पे if we look at here, इसमें बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जो डिटेल से, लेकिन दे आर इम्पोर्टेंट, वो असेसमेंट सही तरीके से होती हैं। सो दैट्स व्हाई इफ इट इज द आस्की objective such a clinical examination, उसमें ये global rating scale जो है they should be used rather than the checklist। अच्छा, किसी कंडीशन के लिए वहां पे चेकलिस्ट अवेलेबल नहीं है और उस क्वेश्चन के लिए चेकलिस्ट जो है बनाने हैं, तो उसमें से ऑब्वियसली एक्सपर्ट, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट जो है, सेवरल एक्सपर्ट रिक्वायर्ड होते हैं और इनकी कंसेंसस के बाद जो है ये डेवलप की जाती है, और इसमें वो सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट हो उसमें शामिल होनी चाहिए, एंड द लेस इम्पोर्टेंट दे शुड बी स्किप्ड। So this is very important to ensure the validity of content, और इसको इंश्योर करने के लिए several expert की consensus जो है ये जरूरी है during the development of the checklist. Evaluators who are trained in the use of checklist should be used. The rating scale, they are widely used to assess behavior and performance, and they are particularly useful for assessing the personal or professional attribute, generic competencies, and attitudes. अच्छा, यहाँ पे एक रेटिंग स्केल की जो एक प्रॉब्लम है जो अक्सर हम इट इज अनएविटेबल और इसका हम कुछ नहीं कर सकते, दिस इज द सब्जेक्टिविटी, और इसकी वजह से, इस सब्जेक्टिविटी की वजह से इसकी रिलेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। सपोज दैट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वेशन, इफ यू आर a keen observer, one exam is keen observer and the other is just observation तो कर रहे हैं लेकिन उस तरह के से हो कीन ऑब्जर्विंग नहीं कर रहे हैं, तो माइट भी दोनों की स्कोरिंग में फर्क होगा। इसलिए इसका एक हल ये कि इफ देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द मल्टीपल एग्जामिनर, तो जो एग्जीक्यूशन कर रहा है, जो परफॉर्मेंस वहां पे ऑपरेटिंग स्किल्स एग्जीक्यूट कर रहा है, तो it should be assessed, it should be checked by two independent examiners। इंडिपेंडेंट से मुराद हम यहाँ पे ये है कि जब वो स्कोरिंग करते हैं, जब उसकी चेक लिस्ट के मुताबिक स्कोरिंग करते हैं, so that both should be unaware of what score they are giving to those students। तो उससे थोड़े हद तक उसकी रिलेबिलिटी जो है ये मेंटेन हम रख सकते हैं। अच्छा, ये इंशाल्लाह दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन कि जो हमारी ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन है,
इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हम डिटेल से, जैसे हमने पहले कहा था कि चूंकि क्लिनिकल एग्जामिनेशन और नॉलेज असेसमेंट में एमसीक्यू और ये आसपी ये कॉमन यूज होते हैं। नॉलेज असेस करने के लिए एमसीक्यू ज्यादातर यूज होते हैं हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में, और क्लिनिकल कम्पिटेंसीज को असेस करने के लिए मोस्टली द आस्पी आस्की ये हेल्थ साइंसेज में, बिहेव साइंसेज में, नर्सिंग साइंस में, पैरामेडिक साइंसेज में, एंड मेडिकल साइंसेज में, डेंटल साइंसेज में, इसमें ये यूज होती है आस्की एंड आस्पी। दैट्स वाई हम इन दोनों एमसीक्यू को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें वी विल डिस्कस व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ the multiple choice question, what are the different what is the anatomy of MCQ, then we will discuss the pathologies and the management, and also discuss the common mistakes which we sometimes we may have during the construction of the MCQ. Similarly, then we will discuss the OSPI and OSCE in detail, that what are the advantages, what are the disadvantages, and how to construct and how to conduct an OSPI and OSPI। इंशाल्लाह ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। In the next third session, we will discuss the OSPI, as well as then we will discuss the short cases, the long cases, and then the 360 evaluation. In the last, we will discuss the second last, the mini CEX, which is the mini clinical evaluation exercise, and the last one, the portfolios। ये हम discuss करेंगे, and that will be the end of this session। मिलते हैं तीसरे सेशन में, जिसमें हम इन डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसिंग द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।